Kisan cause booms again. Government farmer stocks break down. February 21, clarion call for Chalo Delhi. Punjab-Haryana border bolstered. Farmers prepare to push through. Now, apart from a Poklin machine, a JCB is also on standby. Remember, these are all heavy-duty machines that are actually used to clear non-motorable roads. So this is the way the farmers are intensifying their preparations here at the Shambhu border. Haryana Police ready to repulse. Cement blocks, trenches dug, tear gas shelling. Now what you see are constant tear gas shelling that is happening here at the Shambhu border. I'll ask my cameraman to pan the drone. Look over there, the drones that are being used to actually drop the tear gas shells. Just before the face-off between cops and farmers, government offers fifth round of talks. हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें. Farmers now to decide on talks. Kisan Kranti 2.0. Talks or Chalo Delhi? Let me quickly take that question to my colleague Shreya Chatterjee, who is joining us right now from Shambhu border. Shreya, the ball now in the farmers' court, the government offering a fifth round of talks. Are we expecting a press conference soon by the farmers who made any decision at all, whether they are going to go ahead for talks or continue to Chalo Delhi? Preeti, we need to understand that what really transpired here at the Shambhu border today. Now, the farmers were attempting a march is when they got that message from the government that the government is ready for a fifth round of talk. Post that, the farmers held a meeting. As per the sources that we have learned, the farmers will put forward before the centre that if the centre agrees and gives it in confidence that they are ready to discuss on the MSP as a guarantee, only then they are ready to sit, and they also need a clarity on the time and the location where they will be holding this particular meeting. So that is what they were looking forward to say. We are yet to get an official word. Why? Because, you know, they have to take everyone in confidence. There are a certain group that is protesting at Shambhu. The farmer leaders have now gone to the Khanauri border. They are actually going to take inputs from them, and then they will actually come forward on what everyone has agreed. So looking by that, maybe by tonight or early tomorrow morning, we'll get a clarity. As of now, even if it's not official, the Delhi coach seems to be on a hold as of today. Well, you know, there are lots of unconfirmed reports coming in, Shreya. We don't want to get in that because we don't want to heighten the tension, only put out the factual information which is right now above board. But having said that, what is the ground situation right now? Are things in control? Tense clearly, but are things in control? Are the farmers looking to escalate the situation or trying to boil it down? Preeti, I mean, I can corroborate what has happened here at Shambhu today. The visuals may obviously look like it is tense. It is indeed in a difficult situation because it's a roadblock, but we can say that this was a quid pro quo sort of that was being maintained since the last few days. When the farmer leaders in the first half at 11 wanted to move forward, we saw tear gas shells being fired. When these farmer leaders went back to discuss whether they will agree the centre's proposal, we know that there are the front
frontline people, who are really the youth who are actually at the front of the protest, they get agitated. They do not want to wait for a long time, and that impatience has seen in them moving forward and suggesting reckless activity towards the Haryana police. That is why they have responded with tear gas shells. And we have also seen when drones flew, from kites to firecrackers, all sort of measures were used by the farmers here at Shambhu border. So nothing really went out of hand or untoward, because the farmer leaders and some of the farmers we spoke with also say that they also want an amicable solution. If the centre can talk on what they want, they would want it that way. Well, let's just hope that actually really happens, and there is a ceasefire literally with what we are witnessing. Appreciate you joining us, Shreya, with the latest update, joining us from Shambhu border. Let's cut across right now to farm leaders and get a sense on what we can expect in days to come. Chaudhry Savit Malik, National President, Kisan Union, joins us. He's with the agitation. Yashovardhan Azad is a former IPS Special Director, Intelligence Bureau. A lot going down in terms of security, in terms of law and order. You might have seen a lot of discussion on that as well. We are also joined at this time by Ravindra Singh Sharon. He's a senior journalist. He's also going to be joining us. But I want to cut across first to Chaudhry Savit Malik. Chaudhry Savit Malik, अब सरकार ने 5वीं राउंड की टॉक्स ऑफर की हैं. क्या किसान ये टॉक्स एक्सेप्ट करेगा और ये सीज फायर जो चल रहा है कंटिन्यू रहेगा कि नहीं? प्रीति जी, हम हमेशा बातचीत करना चाहते थे, आज भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत कैसे हो? एक तरफ तो सरकार बातचीत का निमंत्रण दे रही है, दूसरी तरफ कीले गाड़े हैं, और अभी एक दुखद घटना आई है, खनौरी बॉर्डर पर एक युवा की गोली लगने से सर में मौत हो गई है। साबित मलिक जी, अभी तक वो पुख्ता खबर नहीं है, तो मतलब बेहतर होगा कि हम वो नेशनल टेलीविजन में जब तक कॉन्फर्मेशन कुछ आती है क्या हुआ तभी बात करें, तो इसको रहने देते हैं। अगर आप हमें बता सकते हैं कि आगे क्या प्रतिक्रिया है फार्मर्स की, कि जो भी वायलेंस हुआ है जैसे ही कंफर्म रिपोर्ट आएगी हम जरूर लेंगे, पर आप ये बताएं कि क्या अभी जो फार्मर्स हैं क्या टॉक्स के लिए जाएंगे? 5वां राउंड है, ऑफर किया है सरकार ने, या चलो दिल्ली की तरफ ही है? नहीं प्रीति जी, किसान हमेशा बातचीत करना चाहता था, आज भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत ठोस तरीके से हो। अगर दिल्ली के लोग आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, वो कोई ठोस रणनीति लेके आए, ये ना आए कि भाई टाल मटोल करके बहकाकर हम आंदोलन को समाप्त करके चले जाएं। अब इन्होंने जो 5 फसलों पे एमएसपी की बात रखी थी, आपको मैं बता दूं कि उन पर ऑलरेडी एमएसपी से ज्यादा रेट मार्केट में मिल रहा है, तो उन पर तो ये एमएसपी देना चाहते हैं, लेकिन और हमारी जो फसलें हैं जो एमएसपी पे कम बिकती है, उन पर एमएसपी देने की बात क्यों नहीं कर रहे? और उन पे भी कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए गारंटी करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का मन ये है कि किसान को बहलाकर फुसलाकर उसको आंदोलन समाप्त किया जाए, लेकिन ये हित में नहीं है। और हम चाहते हैं कि किसान की जो जायज मांग है उनको पूरा करें। आप किसान का कर्जा माफ करें, सारे मुकदमे वापस ले और एमएसपी पे गारंटी दे। और हमारे पैनल में कृष्णवीर चौधरी जी हैं, हमारे सीनियर है काफी, मैंने इनका कल लेख पढ़ा, कई अखबारों में आया, इन्होंने भी कहा कि हाँ, जो गारंटी है उसको ये कर दिया जाए कि उससे कम अगर कोई खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो। तो ऐसा नहीं है, जो सीनियर लोग हैं जो किसान हित में काम करते हैं सब इसको समझ रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बॉर्डर बना दिया है 2 देशों की तरह और एक स्टेट को बिल्कुल भारत से काटने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। किसान शांतिपूर्वक पंजाब से चले थे, आना चाहते हैं, कोई किसान गड़बड़ नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने एक उनको बदनाम करने के लिए हवा बना दिया। दिल्ली में कोई किसान नहीं आया, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए सारे बॉर्डर बंद कर दिए। अरे वो पंजाब से हरियाणा में तो घुस नहीं पा रहा, दिल्ली में आपने चारों तरफ जाम लगवा दिया ताकि किसान के प्रति एक नेगेटिव बने, किसान को लोग बदनाम करने का काम करें। ऐसा नहीं है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से आगे भी करेगा। कृष्णबीर चौधरी जी, क्या कहेंगे आप कि जो अभी 5वीं टॉक्स गवर्नमेंट ने ऑफर की है, अब जो किसान यूनियन का कहना है कि देखिए एमएसपी पे बात करनी है तो करिए, वक्त जाया ना करिए? प्रीति जी, देखिए, हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हल निकाला जाता है। अभी जो पंजाब की एमएसपी की खरीद रही है धान की और गेहूं की, वो तो सारा 100% के करीब जो है, जो खाने में प्रयोग होता है उसको छोड़ के सारा तो एफसीआई खरीद रही थी। अगर हम वहां की स्थिति की बात करें तो पानी की क्या हालत हो गई है आज वहां।
फसलों को बदलाव बहुत जरूरी है। और सरकार ने पंजाब के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के पैटर्न को बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि क्या किया जाए पंजाब को, कैसे बचाएं पंजाब को। तो उसी के लिए मक्का, कपास और अरहर, उड़द और मसूर, दलहन बहुत जरूरी है। और कपास और मक्का का पिछले समय मक्का की शिकायत थी कि सब मक्का एमएसपी से बहुत कम पे बिकी पंजाब के अंदर, तो उसके लिए चूंकि बायोफ्यूल क्रॉप उसको यूज करा जाएगा। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से खड़ा करके सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाया है। एफपीओज को इसलिए बनाया है कि किसानों के उत्पादों को वो एमएसपी से ज्यादा पे खरीद के और उसको कंज्यूमर तक मुहैया करे। दूसरा, जो पैक्स हैं इस देश में 67,000 से ज्यादा पैक्स हैं, उन सबको एक्टिवाइज इसलिए कर रही है सरकार, उनको गोडाउन बनाने के लिए फंडिंग कर रही है सरकार कि वो किसानों से गांव गांव में खुद एमएसपी से ज्यादा पर खरीद करे और वो कंज्यूमर को मुहैया करे। क्योंकि कोई भी सरकार, मैं बहुत स्पष्ट मत मेरा रहा, कोई भी सरकार इतने बड़े उत्पादों को खरीद के क्या करेगी, कहां ले जाएगी। अब आता है बाजार की स्थिति। जो एपीएमसी जी तो कह रहे हैं ना, किसान तो कह ही नहीं रहे हैं कि सरकार खरीदे। मेरी पहले जी उनका तो यही कहना है, किसानों का भी यही कहना है कि हम कहां कह रहे हैं कि सरकार खरीदे। मैं जी बोलिए प्रीति जी, मेरा मत बहुत स्पष्ट है, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि किसानों को बाजार से दूर रखा गया, तभी तो शोषण हुआ है। अगर किसान बाजार में खड़ा होता तो उसका शोषण नहीं होता। अगर वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहले से इतनी तेजी से आगे बढ़ता जितना अब तेजी से काम शुरू हुआ, तो आज वो बाजार में मालिक होता। आज बाजार में जब किसान की फसल आती है तो उसके भाव गिर जाते हैं। ये सच्चाई है कि कई बार तिलहन में भी गिर गया, कई बार दलहन में गिरा, मक्का में गिरा, और ऐसा चने में इस बार गिरा। जो तीन तो मेरा सुझाव ये है, मेरा सुझाव ये है, वो तो उसी की बात करें जी। मेरा सुझाव प्रीति जी सुन लीजिए, अगर ये बाजार में मालिक हो जाते, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर लेते तो ये दुर्गतियां जो हो रही है इसमें सुधार होता। अब बाजार में मेरा सुझाव है प्रदेश सरकारें एक राइडर रखे बाजार में एपीएमसी की मंडी का लाइसेंस। चौधरी साहब, मलिक जी को बोलने दीजिए, दो और पैनलिस्ट है, उनका भी नंबर आना है। बस एक बार मलिक जी बोलिए। मैं चौधरी साहब से इतना पूछता हूँ, जैसे इन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दिया है, इनका छपा है कि हाँ, अगर कानून एमएसपी से कम कोई खरीदता है उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो आपने ये दिया है, बयान दिए हैं, और आप एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप इसके पक्ष में है कि नहीं है? आपने जो बस ठीक है मलिक साहब, आपने बोल दिया, बता दीजिए चौधरी साहब पक्ष में है कि नहीं, क्योंकि दो और पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। बोलिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि बाजार में लोएस्ट कैप लगानी पड़ेगी किसान को बचाने के लिए, तभी किसान बचेगा। उसे जब तक आप बाजार की ताकतों से जब उसका भाव गिरता है तब तो बचाना जरूरी है, और उसके लिए वो A2+FL पर 50% जो है वो कैप होना चाहिए प्राइवेट बाजार का। पर चौधरी साहब इसमें ये भी कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि आप गोल पोस्ट, अंग्रेजी में कहेंगे गोल पोस्ट मूव कर रहे हैं। चलिए कोई अगर उससे कम कोई खरीदता है तो आप मानते हैं कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट है। मलिक जी, मैं वापस आऊंगी आप पे। कैन आई जस्ट ओपन द डिबेट? आई वांट टू गेट Yashwardhan Azad as well as Ravindra Singh Sharon into this conversation. Yashwardhan Azad, you know, there's so much that has been said, that has gone down in print, otherwise on social media, on how these farmers are going to come and make life miserable for those who live in Delhi. Away from all of that, yes, there could be, a possibility of a law and order situation. But having said that, on what is going on in the other side as well, with the kind of rubber bullets that are being used, tear gassing, lathi charge, it's unprecedented. Now, how do you walk that line where the excesses on the farmers are not too much, yet you draw that line? Is it even possible? Well, it's a very, very sensitive situation, Preeti. You realize that the police remembers very, very clearly what had happened on 26 January that particular year, where there were direct clashes between the farmers and the police. Now, in that background, obviously there'll be abundance of caution on the part of the police. Yes, drones were used for tear gassing, and rubber bullets have been used. But tell me, on the farmers' side, when it was very well publicized
that they were taking heavy equipment to break the barricades. They were having commando-like, units of 50 each to go through different areas to be able to encircle the particular place. They were stopping people, and they were on your channel only. There was this lady who had to go, and she was stopped, and she was virtually abusing the farmers. Tell me, in conditions like this, how can you allow farmers to come? If the ministers are talking outside Delhi in Chandigarh, what is wrong with that? And, there is one thing which I must say, which is very, very relevant here, is that, making MSP legal is a demand which, even the earlier government for 10 years did not do it. So obviously you're asking for something which is impossible. So the question is, given the conditions like this, if you allow them inside, there will be mayhem in the capital and you cannot stop it. The only thing which I would suggest as a police officer is that, yes, if you have a delegation of farmers who can be brought into Delhi for talks in a particular place like Vigyan Bhaur or any particular area, that is fine. But to allow all of them, where will you get them? Will you get them in Ramlila Maidan? Will you give them in this particular place? That's what, Yashwardhan Azad, that is what they ask for permission. And usually, one would say that if permission was granted, then the rules of engagement would have also been charted out. That could have been that maybe tractors are not bought if, tractors have been an issue. That in buses, farmers could have been given passage to Ramlila Maidan and exercise their right to protest, Mr. Azad. I would really will not, go by this logic. For the simple reason that this has been tried many times, Preeti, it has just not worked. If you open one border, not only the tractors, everything will just move in, and there'll be a kind of a siege. That's exactly the kind of protests and demonstration we've been having in Delhi. Forget the farmers, even the other delegations which are coming here. They lay siege. No one behaves in, what you're calling the rules of engagement. No side agrees with that. So I think government... I could turn around, Mr. Azad, because the rules of engagement have never been drawn. You've always blocked the borders and you've spoken from there. But, appreciate your point of view, sir. Especially as a police officer, you have a very strong one at that. But I want to also bring in at this point of time, before I come back to you again, Ravindra Singh Sharon. He's a senior journalist. He's tracked both situations where Haryana and Punjab is concerned. Ravindra ji, अभी जो स्थिति है और आगे जाते हुए आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है अभी तक एक कंटेन्ड है ये प्रोटेस्ट? अगर पंजाब की हम बात करें, आपको लगता है कि हरियाणा के जो जत्थे हैं, फार्मर्स हैं, अब जुड़ेंगे इससे? जी बिल्कुल प्रीति जी, नमस्कार। और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, एंड हमने देखा था कि 13 महीने का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी वायलेंस नहीं हुई। यशवर्धन साहब ने जिस तरह से कहा कि लाल किले की घटना का जिक्र किया, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उस पे जो ट्रायल चल रही थी उसमें कितने लोगों को अभी तक सजा दी गई है। देखिए, ये सब माहौल बनाने की चीजें हैं, माहौल को खराब करने की चीजें हैं। तो आज ही मैं देख रहा था, a press release has been sent by the Haryana Police, and they have been claiming that they have been encircled with a parali, and some red chili has been put in this, and that was very deadly. It could have damaged the health of many policemen. But they have not come up so far with any press release claiming that they have shot so many gas tear shells on the farmers. Why this kind of discrimination with the farmers? I don't understand. Dusra, what Krishna Birji has said, that the markets, how, Krishna Birji, can you please elaborate how many countries have so far given access to the farmers of the market, and how successful that model is? Markets and in the entire world has completely failed the farmers, and market, what is this subsidy? What is this intervention? What the farmers are demanding? They are only demanding that there should be some intervention. The market, when the market is open, the intervention from the government should be there. And government's intervention is already there in multiple fields. If you are going to the health sector, then the what is happening in the Sarkari hospitals, that is an intervention of the government in the form of subsidy. They are paying money for the poor person so that he can treat himself. Same is happening with the hospitals. And same is happening with the schools, because the poor people, they are not in this position to go to the
private hospitals or to the private schools for the study or for the treatment. And there comes the role of government when they have to intervene in the form of subsidies. And this is what the MSP is, and this is what the farmers are demanding. So I think you please tell me how many countries are not giving the subsidies. The biggest economy in the entire world. सवाल कर रहे हैं जो ये पत्रकार हैं शरोन साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कंट्री का नाम बता दीजिए जिसमें ये मार्केट फॉर्मूला सक्सेस हुआ है। नहीं, आप ये भी तो बताइए कि मैंने ये कब कहा है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए जो एमएसपी पे खरीद करती है वो बंद कर दी जानी चाहिए। मैंने ये कहा कि 2,28,000 का तो इस बार भी जो है जो उसमें जो खरीद की है एमएसपी पर, सरकार का इंटरवेंशन जो है वो इसीलिए तो है कि बाजार सुधरा रहे। और अब जो सरकार ने 5 फसलों को, जो दाल है 3 दाल है और चौथा मक्का है और 5वां कपास है, उसको जो कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए कि नेफेड आपकी फसल खरीदेगा और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन आपकी फसल खरीदेगा, वो इसीलिए तो करा है कि बाजार को संभाल के रखने के लिए मार्केट इंटरवेंशन के अलावा कर क्या सकती है सरकार है। और उसके लिए सरकार फंडिंग करती है आंसर करने दीजिए। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आंसर करने दीजिए शरोन, मिस्टर शरोन, पहली सरकारों में और आज की सरकारों में कितना अंतर है? 1,06,000 का खरीदते थे पहले। जी रविंद्र सिंह शरोन, प्लीज आंसर, देन आई टेक फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम मिस्टर मलिक and Chaudhary Sahab, I still remember what has been said by the former agriculture minister and one of the staunch supporter of the farmers, the biggest, tallest farmer leader of this country, Chaudhary Devilal. Once the farmers of this area, they have approached Chaudhary Devilal when he was the agriculture minister of this country. And what they asked, Chaudhary Sahab, you are now the agriculture minister of this country. And despite of that, हमारी जमीन आज भी घाटे का सौदा है. What did he say? He said, जब तक जमीन घाटे का सौदा है, तब तक किसान के पास सुरक्षित है. जिस दिन ये फायदे का सौदा होगी, आपके पास इस जमीन को कोई नहीं रहने देगा. So this is okay. I need to quickly get into a news break right now, which is coming in. Appreciate all 4 guests for joining us. Apologies, we couldn't come back to them, but news break coming in. Farmer leader Swarn Singh Pandher, who's leading the agitation, says Chalo Delhi march has been postponed for 2 days. For tomorrow and the day after, farmers will disclose next course of action on Friday evening. So till Friday evening, there's a sort of ceasefire, one can say. The farmers have decided that they are going to deliberate for the next 2 days, and by Friday evening will inform of what will be their next course of action. That's the latest news break that is coming in. The farmers have decided to stall the protest for the next 2 days. There's a pause in the protest. They are going to deliberate possibly on the offer by the government of a 5th round of talks, or regrouping and consulting with other farm associations on what's the best way forward. But we will hear from them on Friday now, Friday evening it is.